All right, so now we have the question of IFRS-2 or Magi question है question 25 from the Kaplan kit. Magi, a public limited company, has entered into several share related transactions during period and wishes to obtain advice how to account for them. So this is the requirement. They need to know कि भाई इसकी accounting जो है वो कैसे perform होनी चाहिए. On 1st May 20x2, Magi granted 500 share appreciation rights to its 300 managers. Share appreciation rights जो है, we know that this is the cash settled share based payment, जिसमें हमें पता है कि cash settled share based payment के अंदर आप क्या करते हैं, number of right expected to vest multiply by the fair value at each reporting date multiply by the time fraction. So this is how you calculate the value of the share based payment expense and the corresponding liability, because cash settled share based payment के अंदर the company is obliged to pay the cash. So जो debit entry है वो profit or loss में होती है, debit profit or loss क्योंकि expense record होता है, और credit entry होती है liability which is the share based payment obligations. So the debit entry is in the expense account, profit or loss, and credit entry is in the statement of the financial position obligation section. All of the right vested on 30th April 20x4, but they can be exercised from 1st May 20x4 up to 30th April 20x6. अब ये भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि यूजुअली ऐसा होता है कि आपकी एक डेट होती है जिसपे आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने उस राइट्स को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं. हमने कहा था कि इफ दैट इज द सिचुएशन, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लेंगे. इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या होता है कि यार देखो, अगर कुछ डायरेक्टर्स अपनी जो राइट्स हैं वो आज एक्सरसाइज कर लेंगे और कुछ लोग लेटर ऑन करेंगे, तो जो लेटर ऑन करेंगे जाहिर बात है दे विल बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज इन द शेयर प्राइस. सो इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ गया था. At the grant date, the value of each share appreciation rise was $10, and it was estimated that 5% of the managers would leave during the vesting period. The fair value of each SAR is as follows. So हमने share appreciation rights यानी cash settle के अंदर we know that कि हमें क्या करना होता है, हमें fair value at each reporting date लेनी होती है. So 30th April 20x3 यानी फर्स्ट ईयर के एंड पे जो फेयर वैल्यू है वो 9 है, उसके बाद जो है वो 11 है, उसके बाद जो है वो 12 है. सो ये तीन किस्म की डेट्स आपके पास अवेलेबल है. All of the managers who were expected to leave employment did leave, यानी कितने परसेंट, जो कि 5% expected थे. The company is expected before 30th April 20x4. On 30th April 20x5, 60 managers exercised their options when the intrinsic value of the right was 10.50 and were paid in cash. अब देखिए, अगर आप उसी 30th April 20x5 पे फेयर वैल्यू देखें तो वो 12 है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 10.5 है. ये क्यों डिफरेंस है, ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था कि वो डायरेक्टर्स जो कि अपने राइट्स को 30th April 2006 तक लेके जाना चाहते हैं, तो जाहिर बात है दे आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज इन द शेयर प्राइस. तो दैट इज व्हाई ये डिफरेंस आता है फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का. Marge is confused as to whether to account for the SARs under the IFRS-2 share-based payment और IFRS-13 fair value measurement. और ये IFRS-13 भी हम पढ़ चुके हैं. तो हमने पढ़ा था कि IFRS-13 जो है fair value measurement वहां अप्लाई नहीं होता जहां पर जिन स्टैंडर्ड्स का अपना वैल्यूएशन का जो है वो क्राइटेरिया हो. अब IFRS-13 जब हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा था वो लेवल 1 की बात करता है, लेवल 2 की बात करता है, लेवल 3 की बात करता है. लेकिन यहाँ पे तो देखिए फेयर वैल्यू और है, इंट्रिंसिक वैल्यू और है, तो IFRS-13 की तो गाइडेंस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे तो एक टेक्निकल बातें हैं जो कि वैल्यूएशन से रिलेटेड है.
इसलिए IFRS 13 जो है will not be applied here। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि IFRS 13 वहां पर अप्लाई होता है जहां पर स्टैंडर्ड का अपना वैल्यूएशन का क्राइटेरिया नहीं होता, जहां पर स्पेसिफिक एक्सक्लूजन होती हैं, जिस तरह IFRS 2 के केस में है, या IFRS 2 हैज ओन क्राइटेरिया फॉर द फेयर वैल्यू मेजरमेंट, तो वहां पे IFRS 13 जो है वो आपके पास अप्लाई नहीं होगा। So Margie is confused as to whether to account for the SARs under IFRS 2 or IFRS 13 and would like the advice how the SARs should have been accounted for between the grant date and 30th April 20x5। तो सिंपल सी सबसे पहले आपके पास कैलकुलेशन है कि कैश सेटल जो शेयर बेस्ड पेमेंट होती है उसके अंदर एंटिटी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करती है। सबसे पहले आप ये थ्योरी लिखेंगे कि इन द कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट the entity recognizes the debit entry in the statement of the profit or loss and the credit entry in the statement of financial position. And these values are calculated as, so obviously we'll be having the 2-year working. So it's starting from 1st May 2003, it ends on 30th April 2003. So सबसे पहले हम 20x3 की calculation करेंगे. So we have, first of all, the number of right expected to vest. What is the formula for it? You take the total directors who have been given the options, वो हमारे पास 300 है जिनको ऑप्शन दी गई है, but not everyone is going to stay। उसके बारे में लिखा हुआ है कि 5% लोग जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। So that means 95% are going to stay within the company। So what we are going to do is 300 multiplied by 95%. Now this gives you the number of the directors who are going to stay within the company. So this is the number of directors. Now you need to multiply it with the share options given to each director to calculate the number of right expected to vest। So 300 multiplied by 95%, इसको 500 से multiply कर देंगे। So you will get the number of right expected to vest। Now this will give you the number of right expected to vest। अब मुझे क्या करना है? अब मैं इसको fair value at each reporting date, because I'm talking about a 20x3, so I'm going to multiply it with $9। तो मैं इसको $9 से multiply करता हूँ। But when I multiply it with $9, it gives you the complete value of this share based calculation। और मुझे तो उसके पहले साल की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको fraction से multiply करूंगा, which is going to be the 1/2 thing। So let's use the calculator। So we have 300 को multiply करेंगे 0.95 से, so it gives you 285 directors, multiply by the 500, it gives you 1,42,500 options, you multiply it by $9, it gives you the full expense, but we are going to apportion it months by 12 fractions से multiply करेंगे, which is the year fraction, divide by 2, तो आपके पास आ जाएगा 6,41,250। सो जो पहले साल की कैलकुलेशन आ रही है वो 6,41,250। अब इससे यही एंट्री हम पास कर देंगे। आप अगर एग्जाम में शो कर दें तो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। सो डेबिट प्रॉफिट और लॉस by this amount, which is 641,250, and credit share based payment obligations, which is a liability thing, 641,250। Okay, so ये पहली calculation होगी। Now let's talk about the 20x4 thing। Now again, so it says all the managers who were expected to leave the employment did leave the company. So the estimate remains the same again in the second year as well। So 300 into 95% multiply by again the 500, which gives you the number of right expected to vest। अब हमें क्या करना है? In the second year, which is 2x4, अब हम change कर लेंगे, we are going to multiply it by $11, because the cash settle के अंदर हमें लेना होता है share price at each reporting date, multiply by 2/2। So again, using the calculator, we have 300 of the directors, 0.95 remains within the company, multiply by 500, which gives you the number of right expected to vest, multiply by $11। So this gives you 1,567,500। Now remember that out of this 641,250 has already been recorded as an expense। तो वो आप लेस कर दोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 926,250,
this is going to become the expense of the second year. So debit profit or loss, which is going to give 926250, and again obligations को हम बढ़ा देंगे क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन हमने रिकॉर्ड की हुई थी 641250, उसके अंदर ये 926250 ऐड हो जाएगा. सो 926250 जब वो ऐड हो जाएगा तो फिर टोटल ऑब्लिगेशन आ जाएगी वही जो कि 1567 अभी हमने कैलकुलेट की थी. सो ये 2 सालों की आपके पास वर्किंग आ गई. ये 2 सालों की पहले आपने सिंपल कैलकुलेशन कर ली. अब याद रखिए कि आपके पास जो ऑब्लिगेशन है, वो टोटल है 1567500, जो दोनों का टोटल बनती है 926250 और 641250. ये हम लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमने सवाल करना है. सो लेट्स राइट इट. डू वी हैव द स्पेस ओवर हियर? हाँ, क्योंकि हमने अभी देखना है कि 60 मैनेजर्स ने अपनी ऑप्शंस जो हैं वो एक्सरसाइज कर ली है. ओके, सो वी हैव द ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 of obligation 1567500. So again is same format के अंदर you need to show your calculation in the exam, but obviously that should be a neat one. क्योंकि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे, so वर्डपैड में अपनी कैलकुलेशन साथ साथ शो कर रहे होंगे. एक्सेल की शीट भी अवेलेबल होती है, सो व्हाटएवर यू फील कन्वीनियंट आप वहां पे शो कर सकते हैं. एक्सेल की शीट यूजुअली यूज होगी जहां पे ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो. इस तरह की छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए सो यू कैन जस्ट शो एंड प्लेस योर आंसर ओवर देयर. वर्डपैड की जो शीट वहां पे अवेलेबल होगी. अच्छा जी, तो ओपनिंग बैलेंस हमने ले लिया जो कि 1567500 है. अब उसमें से कितने लोगों ने अपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, यानी कितने लोगों को एंटिटी ने कैश पे कर दिया? So the cash paid is going to be the 60 managers जिनको कैश पे किया जा रहा है. 60 into कितनी ऑप्शंस थी? 500 ऑप्शंस थी. और कितना कैश पे किया जा रहा है इनको? वो लिखा हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू 10.50. So again we can use the calculator to calculate it. So 60 डायरेक्टर्स को पेमेंट हो रही है, 500 ऑप्शंस हैं उनकी, तो टोटल ऑप्शंस आ गए 30,000 और पेमेंट हो रही है 10.50 के हिसाब से, तो आ गया 3,15,000. ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया. अब जो आपका क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा ऑब्लिगेशंस का, वो कितना रह जाएगा? अब देखिए टोटल डायरेक्टर्स कितने थे? 300 into 95%. ये बहुत लॉजिकल सी कैलकुलेशन है, इसको जरा देख लें. 300 डायरेक्टर्स में से 95% रहे थे कंपनी में, यानी 285 थे. अब 285 में से 60 ने ले ली पेमेंट, तो बाकी कितने रह गए? 225 रह गए. सो यहाँ पे लिख देते हैं, तो 225 डायरेक्टर्स आर रिमेनिंग जिनकी ऑब्लिगेशन अभी कंपनी पर है, और इनटू 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ऑप्शंस निकल आएंगी. और अब अगेन $12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम 30 अप्रैल 20x5 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्लिगेशन अब x5 पे कैलकुलेट हो रही है, तो $12 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो फिर दोबारा देख लें, 225 into 500 और into $12. सो ये 1350000 आ गया. 1350000. अब क्या करना है आपने? अब आपने सिंपली कंपेयर करना है इस दो वैल्यू को इसके साथ, कि देखें क्लोजिंग ऑब्लिगेशन आ रही है 1350 और ओपनिंग बैलेंस में से इतनी पेमेंट आप कर चुके थे. अब आपकी ऑब्लिगेशन एक्चुअली बढ़ गई है या कम हो गई है? सो जरा देखें, 1567500 ये आपकी ऑब्लिगेशन थी, जिसमें से आपने 3,15,000 की पेमेंट कर दी थी. सो बेसिकली आपकी ऑब्लिगेशन बचनी चाहिए थी 1252,500 जो कि थी, लेकिन वो ईयर एंड पर बढ़ के कितनी हो चुकी है? वो ईयर एंड पर बढ़ के 1350000 हो चुकी है, क्योंकि ईयर एंड पर रेट चेंज है. सो 97,500 से ऑब्लिगेशन बढ़ चुकी है. दिस बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, और इस ये आपकी ऑब्लिगेशन को जाहिर बात है इंक्रीज कर देगा. तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, दिस इज 97,500 रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, क्योंकि
ऑब्लिगेशन चेंज हो गई क्योंकि रेट बढ़ गया ईयर एंड पर। तो इस तरह से आपने इस कैलकुलेशन को एग्जाम के अंदर शो करना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले लिखना क्या है कि IFRS 13 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता बिकॉज IFRS 2 हैज इट्स ओन क्राइटेरिया। देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अकाउंटिंग फॉर द शेयर एप्रिसिएशन राइट्स कि जो कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं एज एन एक्सपेंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन, और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो 2x3 2x4 की कैलकुलेशन शो करें। और फिर जब एक्सरसाइज डेट की बात आएगी तो डेट इज ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर 20x5 की कैलकुलेशन शो करके इस तरह से आपने उनको आंसर शो करना है।